also the team that would be facilitating the field trip debriefing and sharing. So, oh, he's here. Harpalji, can you come and sit in front? Because along with this debriefing, we'll also have his observation and his contributions. So, and can you please text those people that you know who can come with your text motivation faster in this room? And who were Santhya and Bhuvana, and who else were in team A and B, like the coordinators? If you can make sure that your team sits with you and the another team sits with you. No, both of them are not there. Okay. So someone can, sir, this is a little help that we want from you. Can you help people when they are entering into the room saying that sit in your positions A and B? Thank you so much. Hi guys, good morning. So we'll quickly first have reflections from both the field trips so that you all know what happened on the other side. And then we'll have a session with Harpal Singh later for a bit. Okay. Do we have any volunteers? Yeah, maybe we'll go with Group A first. Anybody from Group A? This is Group A, right? Yeah. Anybody? What did you guys do? Yes, please, come on. Uh, okay, so good morning, everyone. My name is Mehek Gupta, and I was a part of the team A. And I feel, from my perspective, a lot of local on-ground issues were reflected. So one of being gender disparity. So we were talking about how women should be a part of the local panchayat system and how contributions from women participants can lead to more focused discussions. And secondly, we also got to know a lot of on-ground perspective from the people who are leading the committees. So disparities like uh, from the policy angle and the implementation angle. So there's a little gap from that side. So one of the persons talking about how they lead the organization is that they said that the government budget is a lot. So money is not a problem, but planning it and implementing it in terms of righteousness for all, I think that is a little bit of something which is at stake, right? So I think it was a very wonderful insight into how the reality works. This is long. Okay, thank you so much. Anybody from Group 2? Yeah, please give her a round of applause. Okay, anybody from Group B? Yes. Please don't forget to mention that we got snacks. So, hello everyone. My name is Shivam. I was with the group B yesterday, and we visited the Kambolaj village yesterday. So it was very interesting because we learned about a lot of different things. For example, they taught us about climate smartness and how they are imparting classroom trainings as well as field training and capacity building to farmers. And they are trying to get awareness as well as awakening. Uh, they informed us about how food security has a much greater risk and a risk which is about to come much sooner as compared to the other effects that we're looking at climate change. So they are an Section 8 non-profit, and they are also working to take some of the farming innovations to the farmers, because there's a lot of research and a lot of things that are happening which could be beneficial to the farmers, but the market access to those is not there. So it is also one of the work areas where they're taking those innovations and those
new things that are happening to the farmers, so it can be beneficial, because even though the standard of life has increased a lot, but the farming methods and techniques are still the same which were those centuries ago. Those have not been upgraded. They also partner with a lot of corporates to get CSR funding. So they also give us some demonstration about the new techniques that they are using, which is for example, they demonstrated hydrogel, which actually retains water. So there was 2 pinches of that hydrogel in a glass of water, and it could retain that entire glass of water. And it became like a jelly. Yeah, it became like a jelly. So it was very interesting for us to see how, and it was biodegradable completely. So because of erratic rainfalls and less number of rainfalls and heavier rainfalls on the day when it actually rains, farmers who are dependent purely on rainfall suffer a lot. So this was an innovation that could be used. We also saw a live demonstration for rain irrigation. It is uh, um, it is like a mixture of sprinkler plus drip irrigation, if I could say it like that, because it's like there's actually raining and the water consumed is much less. So like instead of 4 hours, the rain irrigation can do the job in 10 minutes. They also demonstrated several tools which make the work of the farm laborers easier. For example, people who have to bend down and pick up weeds from the farm, they take a lot of time, and it takes a lot of labor. With the help of those equipments, which we even used ourselves, it becomes much easier. Even though it's still a lot is physically taxing, but as compared to the original method, it's much easier. They emphasize the importance of cow-based farming because the urea and the fertilizers that we get in the market are, aside from the beneficial components such as NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, there are a lot of carcinogens in those fertilizers and pesticide and all the chemicals that are used. So they emphasize the importance of cow-based farming because it's natural, and it also has all the uh, elements, as well as it helps promote the growth of microbes, which can naturally do the nitrogen fixing in the soil, and it helps the plants a lot. And they said that the important focus is soil health improvement, because if the soil is healthy, it's like the mother is healthy, then the child will be healthy. And even if the weather is a bit erratic, that child and that mother will still survive. So it was a really interesting session. Field visit. We learned a lot, and the difficulty the farmers are facing, and the demonstrations that we saw was wonderful. So it was really great. Thanks. Hi everyone, good morning. I think a lot of us are here now. I would like to introduce Mr. Harpal Singh. He's here from AKRSP, and I mean, it was supposed to be day 2, but koi nahi, aaj karte hain. He's here to let us know even more about adaptation, loss and damage in the context of agriculture and water, which would help us build policy inputs and recommendations, which is why we are here for today. So, sir. Thank you, Shruti. Thank you very much, everyone. Thank you, Shivam and Mehak, for wrapping the field trips very much, very lightly. How are we feeling today? How was the field trip? Did we have fun? Yes or no? Okay. Okay. Can we have the presentation on? Okay. So what I'll do is I'll wrap up something what we have learned in first and second day. I'll cover something about physical science of climate change, what Hema ji did did the exercise on first day about climate risk. No, and I'll cover something on adaptations, which Rajini and other participants mentioned, and I'll go more in depth into it, and we'll talk about losses and damages and something on finance as well, because I had to cover migration and finance, the other part as well. All right. So can you go to the next slide, please? Thank you. So what I'll do is we'll have a two-way discussion. I'm not here alone to just give a presentation to you guys. All right. तो we'll have a discussion. हम बात करेंगे थोड़ा बीच में भी मेरा हिंदी आ जाएगा because I am very habitual
इन टॉकिंग इन हिंदी. मैं बहुत लोकल कम्युनिटी के साथ बहुत काम करता हूँ, तो मुझे आदत है बीच बीच में आ जाएगा हिंदी, सो प्लीज़ बेयर विथ मी. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हम सब समझते हैं अराउंड आइडेंटिफाइड चेंजेस इन अर्थ क्लाइमेट दैट हैज़ लास्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. हम अराउंड 30 ईयर्स का टाइम लेते हैं जिसमें चेंजेस होते हैं, जो कि हम एक क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बात करते हैं. कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? थैंक यू. सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स आप लोगों ने शायद पहले जानते होंगे या फिर यहाँ पे आने के बाद सुना होगा. सम ऑफ द टर्म्स पीपल कंफ्यूज विथ ईच अदर. लोग वेदर, क्लाइमेट, एक्सट्रीम इवेंट सबको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट चेंज को भी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. इम्पैक्ट्स, थ्रेट्स, रिस्क, वल्नरेबिलिटीज़. सो दीज आर वेरी डिफरेंट टर्म्स. तो कोई बताएगा वेदर क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप प्लीज. Weather is a day-to-day event and climate is a longer event, right? Extreme weather events similarly short duration में होगा, erratic होगा, ठीक है. Climate variability and climate change के बीच में क्या difference होगा? Again same जो weather और climate का है, variability होगा वो short term होगा, seasonal होगा. Summer आएगा, winter आएगा, rainfall आएगा. अब उसका period में difference हो सकता है variability में, but change जो है वो long term होगा, ठीक है. इम्पैक्ट्स, थ्रेट्स, रिस्क, वल्नरेबिलिटीज, क्या डिफरेंस होगा कोई बता सकता है? आई स्टार्ट पॉइंटिंग टू people, okay, if I don't get any response from you guys. Anyone? Yes, please. Hmm. Absolutely, very good. Anyone, what is climate risk? Yes, please. Little louder, little louder. Yeah, right. I would like to add what you mentioned. Risk is more associated in towards impacts on future, right? So जो future में होगा, impacts तो अभी presently हम face कर रहे हैं वो होगा. Either it could be positive or negative, right? But risk more or less future में क्या risk होगा climate change की वजह से, ठीक है? तो वो risk future का बात होता है, impacts present का जनरली बात होता है. Vulnerability, anyone? Yes. Right. Thank you. Okay, we can go to next slide. So next slide please. So ये हम रिस्क की इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं. सो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इवेंट है, लोकल इवेंट में हो सकता है, बट जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वो लोकली फेस्ड है, मतलब लोकल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा कि सी लेवल राइज हो रहा है तो पूरे ओशन का हो रहा है. मतलब अगर आप ओशन सर्कुलेशन मॉडल्स देखेंगे या जीसीएम्स देखेंगे तो कुछ जगहों पे सी लेवल राइज, मतलब सी लेवल का जो लेवल है, मतलब सी लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, कुछ लेवल पे इंक्रीज हो रहा है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन. सिमिलरली साइक्लोन्स का भी आप बात करो, एक्सट्रीम इवेंट्स का अगर बात करो, ओशनिक टेम्परेचर्स का बात करो, सरफेस टेम्परेचर्स का बात करो, तो ये बहुत ही लोकल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो हम फिनोमिना ग्लोबल है बट उसके इम्पैक्ट्स आर वेरी मच लोकल, ठीक है. सो इम्पैक्ट्स आर टिपिकली एक्चुअल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. हम बात करें तो किसके ऊपर इम्पैक्ट होंगे? बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी हो गई, नेचुरल सिस्टम्स हो गई, ह्यूमन सिस्टम्स हो गई, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है. बायोलॉजिकल नेचुरल में सब कुछ, बायोडाइवर्सिटी सब कुछ कवर हो जाएगा. इकोसिस्टम्स, उसका सर्विसेज, उन सब के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनकी बात करें. अब ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हो गए, उसकी वजह से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर होंगे? एनीवन? Okay, so impacts are two types of impacts, right? Direct and indirect. So direct impacts are on natural systems, human systems, infrastructure, ecosystem services. And what are the indirect impacts of climate change? Okay, some of them are direct impacts. Indirect changes.
Absolutely, absolutely. So it will further lead to, loss of productivity, loss of income, loss of livelihood, a loss of education for uh, communities, etc. Right. So, and these impacts, direct or indirect, mostly direct, indirect impacts are further exacerbated by other factors like poverty rate, education, lack of awareness, lack of gender inequality, higher dependency on natural resources, जो हम कल देखा होगा या फिर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि most of these communities are highly dependent on natural resources for their livelihoods, right? तो अगर वो impacts होंगे तो they'll certainly uh, be more at the risk. Can we have next slide, please? थैंक यू. सो ये फिर रिस्क की बात हो गई. हमने अभी इम्पैक्ट देखा तो रिस्क किस किस के ऊपर रिस्क ज़्यादा है? एनीवन? यस. Absolutely. Can you give some examples of some of the systems that are at high risk? Hmm. Right. Right. Yeah. Absolutely. So, as sub-Saharan Africa is an ecosystem, we can say that. So, ecosystem and the services, water and food security, physical infrastructure, networks and services, telecom network आ गया, आपका road network आ गया, right? Human health, human settlements, governance and institutions, all of them are at high risk. Right? Can we have next slide, please? Uh, so coming to climate vulnerability, right? So vulnerability comprises of three factors. Can someone name those factors? Yes, please. Economic circumstances. I'm talking about the factors that makes up vulnerability. Okay, it's a part of exposure, right? Yeah. Yes, please. A little louder. Okay, so it's a part exposure, all right? So exposure could be a climatic exposure or any other shock, right? So that's one factor. There are two more factors. It's written. I'm very sorry. It's very font is very small. Adaptive capacity and sensitivity, all right? So exposure and sensitivity both lead to high vulnerability, all right? And adaptive capacity helps to reduce the vulnerability. I have not written down the formula here. So, so it's a function of these three factors. So exposure is climate change and what is at risk from climate change, all right? So mainly we'll talk about how a particular community is, let's say they are living in a extreme environment, they are living in a desert. So they are at high exposure to climate change. So they are at high risk. Sensitivity also, biophysical effects of climate change, uh, considers as socioeconomic impacts. So as you mentioned, the lack of economic means, so it comes under that. So that's their sensitivity though, and adaptive capacity, the capability of the community or a system to cope up with the changes. That's their adaptive capacity. So can we have next slide, please? Right. So we'll talk about the impacts on climate change on water. So what's the relationship between climate change and water? Can someone? Yes.
storm water, sea water intrusion you are talking about. Yeah. Anything else? Anyone else? Affecting marine life. Okay. Exactly, exactly. Everything starts from there, right? So we can say that climate change is primarily a water crisis. Everything depends on water. If we talk about globally, nationally, locally, at any scale, right? Globally, if we talk about, as I mentioned about earlier, about the ocean circulations, right? So everything is climate change is highly impacting the ocean circulations. So it further impacts monsoon patterns. It further impacts how much amount of rain falls at any certain place, right? And while at a global level, it also impacts the local level water resources as well, be it groundwater or be it surface water, right? So extreme weather events are making water more scarce, more unpredictable, more polluted, or all of them three combined. So these impacts are through our water cycles, threaten agriculture, biodiversity, sustainable development, people's access to water, sanitation, their well-being, etc. Right? So हम कहावत है ना, जल है तो जीवन है. तो जल नहीं होगा तो nothing will be there, right? So I would like to have a two-way conversation. Please cooperate. Is it not a मैं presentation यहाँ पे देने नहीं आया हूँ, मैं facilitate करने आया हूँ यहाँ पर. So I like to have a two-way conversation. कहीं भी आपको कुछ doubt है, कुछ add on करना है, so please feel free to raise your hand, or you can share it directly. All right. So flooding, cyclones, sea level rise, जैसे उन्होंने बताया. So all of them contaminates not only water resources but land as well. All right. Can we have next slide, please? Glacier melting, ice caps melting, snowfields are rapidly disappearing, droughts and wildfires are destabilizing the communities, growing demands of water increases the needs of energy intensity, all right? Water pumping and transportation and for treatment, right? So all of them are being impacted by climate change. Can we have a next slide, please? तो थोड़ा नेशनल कंटेक्स्ट में बात करेंगे हम इंडिया के कि क्या सिचुएशन है अभी वाटर की क्लाइमेट चेंज के रिलेशनशिप पे. तो 1950s के बाद अगर इंडिया में देखें तो मॉनसून का मतलब रेनफॉल का डिक्लाइन हुआ है. हम नंबर ऑफ रेनी डेज की बात करें या अमाउंट की बात करें, ऑन एन एवरेज अक्रॉस इंडिया कुछ जगहों पे इंक्रीज हुआ, जगहों पे और ज़्यादा डिक्रीज हुआ है. बट अगर एवरेज देखें तो इट्स डिक्लाइनिंग, राइट. वाइल जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स है, इराटिक रेनफॉल है, वो इंक्रीज़ हो रहा है कि एक दिन में एक वीक का बारिश गिर गया. आप सब देख रहे होंगे कि क्लाउड बर्ड्स की इवेंट्स आर हैपनिंग वे मच मोर नाउअडेज, राइट. हर जगह आज फ्लड्स आ रहा है. बेंगलुरु की बात करें या केरला की बात करें या आसाम में तो हर साल आता है, बिहार में हर साल आता है. बट उसका फ्रीक्वेंसी जो था वो इंक्रीज़ हो गया है. पहले फ्लड्स का इतना नहीं होता था, राइट. तो ग्राउंड वाटर केटर करता है अराउंड 85% ऑफ रूरल डिमांड्स और 50% रिक्वायरमेंट्स अर्बन जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ग्राउंड वाटर से आता है. अब वो अगेन जो ग्रुप ए में बात कर रहे थे वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, जो सबका है वो किसी का नहीं है. सो नो वन टेक्स केयर अबाउट दैट, राइट. और 60% से ज़्यादा की इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स होती है वो ग्राउंड वाटर से ली जाती है. अब अगर आप उसको रिप्लेनिश नहीं करोगे तो फिर फ्यूचर में क्या होगा, राइट. एग्रीकल्चर सेक्टर कंज्यूम्स अराउंड ओवर 85% ऑफ इंडियाज़ वाटर. And climate change could reduce the annual agriculture income in the range of 15 to 80% in on an average in irrigated areas and 20 to 25 in unirrigated areas. Can we have next slide, please? Thank you. So again, it is very much related to soil.
ठीक है, इरेटिक रेनफॉल होगा, सॉइल का इरोजन होगा ज़्यादा। हमने कल देखा कि इरोजन को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, एफ क्या कर रहा है। तो इरोजन कितना एक्सटेंसिव हो रहा है, हम कंट्री की बात करें तो इंडिया में वाटर एंड विंड की वजह से अराउंड 162 एंड 167 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया रिस्पेक्टिवली इज अंडर इरोजन राइट नाउ। इंडिया का एरिया कितना है टोटल, कोई बताएगा? ओके, राइट, 32 lakh, it will be converted into hectares. It's somewhere around 600 million hectares आता है। सो सॉइल इरोजन की अगर बात करें फर्दर तो 36 ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री which is around 322 million hectares is under erosion. अब एक अगर हेक्टेयर की बात करें, इट्स ओके, इट्स ओके, या so we'll talk about further more on erosion. सॉइल इरोजन का अगर आप ग्रुप एक ही अगर मैं पूछूं तो उन्होंने क्या क्या देखा था कल? तो इरोजन हो रहा है उसके बाद, या प्लीज। राइट, राइट। अब सॉइल इरोजन का एक और मैं इम्पैक्ट आपको बता दूं कि एक हेक्टेयर से जितना सॉइल इरोड होता है वो कहाँ एंड अप होता है, कोई बताएगा मुझे? रिजर्वायर्स में या अल्टीमेटली सी में, राइट। सो अगर हमारे पास रिजर्वायर्स है जो हम वाटर स्टोर करके रखते हैं, हम इधर टू प्रोड्यूस हाइड्रोलॉजिकल पावर और टू फॉर इरिगेशन। सो एवरी ईयर इरोजन अगर होते वक्त इंडिया में अराउंड, कैन यू हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो जो भी हमारे रिजर्वायर्स है उसका 1 to 2% कैपेसिटी डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू हाई सिल्टेशन जो इरोजन की वजह से होता है। ठीक है, तो इतना पैसा खर्च करके जो बड़े बड़े चेक डैम्स, बड़े बड़े रिजर्वायर्स, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, एंड एवरी परसेंट 1 or 2% कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू check that soil erosion right at the beginning. Can we have next slide please? All right, so we'll talk about some relations of climate change and agriculture. शिवम ने बहुत अच्छे से बताया था अभी यहाँ पर। कैन एनीवन फ्रॉम द ग्रुप टू वुड लाइक टू एक्सप्लेन? I'll start pointing fingers to people, okay? Yes. Hmm. Yeah, exactly. Anyone else? Anyone else? Yes, please. Hmm. Hmm.
Right, right, exactly. Anyone else? Yes, please. क्लाइमेट चेंज की वजह से आप बता रहे हो। Right. Anyone from the back? People are busy on their mobiles. Hello. Please be here. Yeah. Hmm. Hmm. Okay. White grub, mealybugs, all of them. Right. Hmm. Absolutely, absolutely. Right. Hmm. So feeding is a feeding cycle. Yeah. Hmm. Right. So if I talk about some numbers, 14% of total greenhouse gases are emitted by agriculture. So we had you guys just mentioned about the one relationship, one way relationship, how climate change is impacting agriculture, but there's another aspect that how agriculture is also contributing to climate change, right? So about total of GHG emissions, 14% comes from agriculture across all across globe, right? So what are some of the practices, agriculture practices that contributes to GHG emission? Can anyone? Feedstock. So we are talking about relationship between climate change and agriculture. You guys gave wonderful examples of how climate change is impacting agriculture. All right. So there's another inverse relationship, how agriculture is contributing to climate change as well. So can anyone give some examples? Yes. Greenhouse effect. Uh, how? I mean, could you? I'm talking about the agriculture practices that contributes to GHG emission. ऐसी कौन कौन सी कृषि की पद्धतियां हैं जो हवामान में हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका उत्सर्जन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? राइट. You are absolutely right, but partially I'm talking about the agriculture practices. Okay, so these all lead to biodiversity degeneration. Slash and burn could be one of the examples. Stubble burnings is one of the examples. Yes. And how does it work? Okay, so you are talking about the production aspect of the chemical pesticides. Okay, very good point. I'll come to that. Okay, okay. Anyone else? Partially right. Okay, so pesticides, chemical pesticides application is very least of the, I would say,
responsible factors that contributes to directly GHG emission from agriculture sector. The two major factors are uh, tillage and use of nitrogenous based fertilizers, not pesticides but fertilizers. We are talking about application only. We are not going to life cycle assessment of chemical fertilizer right from production to application. We are talking about here only application. So so here are some of the numbers. The conventional agriculture practices that those are responsible for GHG emission. I have converted all the numbers into one unit. It's metric ton CO2 equivalent per unit per year. So we have different units for different practices. So direct emission from land under tillage. All right. So if we have a 1 hectare of land which is under tillage every year, so it leads to about 3.8 metric ton of CO2 per year. A hectare of land. All right. Yeah. So every soil has a carbon dioxide store under every agricultural soil, right? So if we subject the soil under tillage, we are disturbing the soil and we are exposing the subsoil into the atmosphere. So the CO2 which was stored under the soil, it gets emitted in the atmosphere. All right. Land under tillage is the highest, I would say, culprit for in the agriculture sector. Right. Another is we have emission from nitrogenous fertilizers, यूरिया, DAP, जो भी आपको बता रहा था यहाँ से, ठीक है. तो अभी again 1 kg of nitrogenous fertilizers leads to about 0.009 metric ton CO2 equivalent per unit per year, per kg per year. All right. So it seems very less here. 1 kg is only 0.009, but the unit is very less, and the unit on which we are measuring the emission are also very high, metric ton. So अगर हम इंडिया की बात करें, किसी को आइडिया है कितना फर्टिलाइजर यूज़ होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, DAP. Any guesses? Anyone? So it's into millions of metric ton. All right. So that's again very huge factor that contributes to GHG emission directly from the application of the nitrogenous based fertilizers. Then we have direct emission from diesel that is being used for irrigation, farm machinery, but again it's very less if we compare to unit contribution. But again, if we see how much diesel is being consumed by the sector, it again comes to a very large number. Then we have another sector which sort of comes under agriculture or livestock. Someone, Hitaji again mentioned about how enteric emission comes into play. फर्स्ट डे में क्लाइमेट फेस्टिवल के वक्त बताया था ना कि जो गाय का बर्पिंग होता है उससे निकलता है एमिशन, तो इट्स कॉल्ड एंटेरिक एमिशन, राइट. जो स्मॉल की वजह से लार्ज रूमिनेंट्स होते हैं, दे हैव रूमेंट्स इन द स्टमक, मल्टीपल चेम्बर्स, एंड दे डाइजेस्ट फूड, दे chew it, they again digest. So the process ferments the food and produces methane, CH4, right? Again, which is very high, responsible. A single dairy cattle emits about 1.568 metric ton CO2 in a year. So again, it's very huge. And if we talk about number of livestock that we have in India, India is the highest number of livestock we have, right? And again from emission from unmanaged manure, right? So
Agriculture has a two-way relationship with climate change. It's getting impacted and it's also contributing. Can you hear next slide, please? So ये तो हो गया climate change का. I wanted to have some more participation from you guys कि जो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या लगा तो आप और भी करते तो अच्छा रहता. But we'll talk about how mitigation, adaptation, and how can we address losses and damages. So basically climate actions. Can you hear? Yeah. So mitigation. कोई बताएगा mitigation क्या है? Yeah. Anyone else? So mitigation has two parts. एक तो हो गया direct emission reduction और दूसरा हो गया sequestration. Right. Emission reduction हो गया तो जो हम practices को change करके करते हैं, हम alternative source of energy हो गया या फिर reducing the transport required, बहुत सारा possibilities है. Right. तो वो इट्स वन पार्ट कि आप डायरेक्टली इमिशन होने से रोक रहे हो एटमॉस्फेयर में. दूसरा है कि जो हवा में है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है, आप उसको कैप्चर करके सिक्वेस्टर कर रहे हो. राइट. तो कोई मुझे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एग्जांपल दे सकता है? प्लांटेशन, वेरी गुड, वन ऑफ द मेजर. ओशियंस, या ओशियंस आर carbon capture and storage you are talking about, right? Direct air capture, artificial या direct air capture कि आप directly हवा में से capture करके nowadays mostly on Europe बहुत सारे artificial capture machines लगाए हुए हैं जो directly, yes, that's part of emission reduction, right? It's, again right, mitigation, but plantation, someone mentioned plantation earlier. Plantation basically. Yes. So we have some example: carbon dioxide removal, energy system transfer, industrial system transfer, building green infrastructure, sustainable transportation, land use change, planning, etc. Right? So we won't go more in details about mitigation. It was just to give you some idea about it. We are here to focus more on adaptation and loss and damages. We will move further. So adaptation का कोई मुझे definition बता सकता है? Yeah, please. Anyone would elaborate on this? Absolutely. What is happening? Right. So in terms of climate change, मुझे कोई example देंगे? हमने बहुत सारा बात किया है, हम 2 दिन से adaptation की बात कर रहे हैं, हम लोग कल देख के आए. Yes. Okay. I was asking about examples. Yes. Fishing. Okay. Yeah. So yeah. Absolutely. Yeah. So yeah. Any more examples? Yeah. Come again? Okay. So you are talking about drought-resistant crop varieties. Mangroves are also part of adaptation. All right. So we have some examples on sustainable and land water management.
जो आप कल देख के आए यहाँ पे ग्रुप ए गया था, ठीक है। कोस्टल डिफेंस, मैंग्रोव्स का किसी ने बात किया यहाँ पर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। Maybe we can pass it around. Anybody has, if anybody wants to say something, I have the mic. Just call me. So these are some of the categories and types of adaptation. Alright, ecosystem based adaptation जो हमने कल देखा, then other community based adaptation जो CS climate smart agriculture की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ecosystem based adaptation कौन सा है कि जो adaptation biodiversity और ecosystem के services को use कर कर हम कोई भी सिस्टम को क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट्स को झेलने की क्षमता प्रदान करे, वो इकोसिस्टम एडाप्टेशन हो गया। कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेशन कौन सा है कि जो कम्युनिटी की कैपेसिटी को बिल्ड करके उनका जो नॉलेज है, उनका जो कैपेसिटी है वो बढ़ाकर उनको सक्षम बनाए कि वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को झेल पाए, ठीक है। तो वो जितने भी एडाप्टेशन की हमने बात की, तो वी कैन कैटेगराइज देम अकॉर्डिंगली कि कौन से इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन है, कौन से कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेशन है। इसमें भी दो कैटेगरीज आ सकती है फर्दर कि एंटिसिपेटरी और रिएक्टिव, कि कौन से हमने पहले से प्लान करके रखे हुए इम्पैक्ट्स को, रिस्क वगैरह को ध्यान पे रखे हुए, और कौन से रिएक्टिव है कि इम्पैक्ट्स रिस्क आ रहे हैं और उसको कम करने के लिए उसके रिएक्शन में हम कौन से एडाप्टेशंस करें, ठीक है। वी विल मूव फर्दर। थैंक यू। रेजिलियंस, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट रेजिलियंस कि रेजिलियंस कैसे होगा। एडाप्टेशन कैपेसिटी किसी भी सिस्टम की, चाहे वो नेचुरल सिस्टम हो, ह्यूमन सिस्टम हो, इंस्टीट्यूशंस हो, तो उसकी वजह से उसका जो फ्यूचर रिस्क को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को हम रेजिलियंस कहेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में रिस्क, वो इम्पैक्ट्स आए, वो रिस्क आए, तो वो सिस्टम उतना अफेक्ट ना हो इम्पैक्ट्स की वजह से, ठीक है। एंड इट कैन बाउंस बैक टू इट्स नॉर्मलसी, एंड हाउ क्विकली इट कैन बाउंस बैक टू नॉर्मलसी। सो वो सिस्टम का रेजिलियंस होगा। वी विल मूव फर्दर। So I'll talk about some of the adaptation intervention that we at AKRS are implementing in, which have again mitigation co-benefits. So adaptation and mitigation go hand in hand. Mitigation के भी adaptation co-benefits होंगे और adaptation के भी mitigation co-benefits होंगे, right? So these is the process for adaptation. We do we appraise the climate change vulnerability and impacts, क्या क्या है वो किसी भी local condition में हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से एडाप्टेशन वहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। देन वी इम्प्लीमेंट दोज एडाप्टेशन अलॉन्ग विद द कम्युनिटीज़, एंड देन वी मॉनिटर एंड इवेल्युएट दी चेंजेस क्या हुआ है एंड व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम इट, एंड देन वी फर्दर वर्क अपॉन इट, उसको फर्दर बिल्ड करके वी कैन रेप्लिकेट इट समवेयर एल्स, वी कैन स्केल अप यूजिंग दैट लर्निंग्स एक्सेट्रा। So these are some of the sustainable and affordable scalable water solutions, rainwater harvesting and recharge, जो आपने कल देखा, जो गेबियन स्ट्रक्चर्स थे, बहुत सारे वाटरशेड का अप्रोच पूरा अगर देखें तो वो आता है आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फार्म पॉन्ड्स, पॉन्ड डिपनिंग, वेल रिचार्ज, चेक डैम्स कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, माइक्रो इरिगेशन, SRI एंड डायरेक्ट सीड ऑफ राइस, पैडी की टेक्निक्स है जो बहुत ही कम पानी यूज़ करती है। पैडी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर of methane emission across the world, right? And SRI and DSR both can help to reduce those direct emission from the paddy fields, right? Especially DSR, which is being adopted at various levels across the world. Then we have farm mechanization and use of renewable energy, and again rainwater, reusing the wastewater from domestic purposes. We'll move further. I've been asked to quickly wrap around, so I'll move ahead. We have sustainable, affordable soil moisture conservation techniques, which is in situ soil moisture conservation, zero tillage. So tillage is, as I mentioned earlier, that is one of the largest contributor for direct GHG emission from agriculture soil, right? So zero tillage it actually conserves the, not only conserves the CO2 emission, but also conserves the soil moisture as well, in the soil. Then we have biomulching and cover crops that we cover the agricultural soil with biomulch,
either by biomulch or by cover crops, just to hold, just increase the moisture holding capacity of the soil. Right? We have land restoration, ridge area treatment, drainage area treatment, again part of the watershed development, farm bunding, common land development. We work on forest, pasture and grasslands, sacred groves, farmlands, right? So to regenerate and to help them regenerate and restore. Common land have very direct relationship with the farmland. अगर आप pollination की बात करो तो the birds and the insects that help to pollinate the crops, they come from the common lands that surrounds the agricultural field. So it's very important to protect them as well. We'll quickly move further. Some of the examples are plantation restoration, mangrove plantation, Miyawaki forest. मैंग्रोव का यहाँ पे सब लोगों ने बात किया. मियावाकी फॉरेस्ट, सम माइट नो अबाउट दी कॉन्सेप्ट. जिनको नहीं पता, मियावाकी इज़ दी टेक्निक टू प्लांट दी ट्रीज इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दैट so that they have a high competition and they grow very fast. You guys can look up to Miyawaki technique of plantation. It was developed by a botanist from Japan. It's very interesting technique. We will go more further. So these are nature-based solutions. As I mentioned, mangrove is one of the leading example of NBSS that have mitigation as well as adaptation potential. Local community can draw livelihoods, fodder, and recreational benefits from the ecosystem. And while as well, mangroves are about 3-4 times higher in capacity to capture CO2 from atmosphere. Climate smart agriculture, आप लोगों ने यहाँ पे कल देखा होगा, ठीक है. So further, like before going to agriculture, can someone explain about agriculture seasons? कौन-कौन से है, कौन-कौन से season में कौन-कौन से crops होते हैं? Not you, you please sit. खरीफ, रबी, ज़ैद. कौन सी सीजन में कौन से क्रॉप होते हैं, खरीफ में कौन से क्रॉप होते हैं? किसी ने पूछा, ग्रुप में से किसी ने पूछा, यहाँ पर इंटरेक्शन किया था किसी फार्मर्स के साथ? These are kharif crops, right? And rabi में wheat, chana. These are pigeon peas. So it's very important to understand agriculture first before going into climate smart agriculture, right? So हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में, बट अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो मोर देन 50% ऑफ एरिया इज़ रेन फेड. वहाँ पे एग्रीकल्चर है ही नहीं, आप इरिगेशन है ही नहीं, तो आप वहाँ से माइक्रो इरिगेशन कहाँ पहुँचाओगे? सो अगर इरिगेशन वहाँ पे चाहिए तो यू हैव टू वर्क ऑन वाटर सिक्योरिटी फर्स्ट. आपको वाटर शेड के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको वाटर रिचार्ज के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? सो आफ्टर वर्किंग ऑन वाटर यू कैन शिफ्ट टू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. ठीक है, तो क्या है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? FAO की डेफिनेशन है, सब लोग देख सकते हैं. आई वोंट गो इनटू इट. क्यों ज़रूरी है? इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट प्रोटेक्ट्स क्रॉपलैंड, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, and it addresses the interlinked changes on food security and climate change. All right, thank you. So 3 main principles है climate change के, climate smart agriculture के. एक तो है sustainably increasing agriculture productivity and income of the farmers. ठीक है, आपको उनकी productivity भी increase करनी है और उनकी income भी increase करनी है. ये सबसे पहला objective है. Second है adapting and building resilience to climate change while reducing vulnerability. Yes, second objective. Third is reducing and removing greenhouse gas wherever possible. ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि जो एग्रीकल्चर, हमने पहले बात की कि एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि वो जो रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस है जो एमिशन करती है उसको कम कर सके, या उसकी जगह पे कोई और प्रैक्टिस कर सके. जैसे टीरेज करते हैं उसके ऊपर ज़ीरो टीरेज करो तो आप सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करोगे, बायोमल्च करो तो आप सॉइल को कवर करके रखोगे. ठीक है, एक्सेट्रा. तो सस्टेनेबल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करें तो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, हम
लैंड यूज़, फर्टिलाइजर्स, लाइफ स्टॉक के लिए जो भी रिसोर्स यूज़ करता है उसका एफिशिएंसी लाए, एनर्जी का यूज़ में एफिशिएंसी लाए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है जिसमें जीरो टिलेज, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस होता है, परमानेंट सॉइल कवर थ्रू बायो मल्चिंग एंड cover crops, crop rotation, crop diversification, and soil nutrient management through using bio inputs rather than using chemical fertilizers. ठीक है, आप फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करो, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो कंपोस्ट यूज़ करो, एक्सेट्रा. ठीक है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट की बात करो तो जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्टॉक इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट CO मीथेन एमिशन थ्रू एंटेरिक फर्मेंटेशन, राइट. सो उसके लिए भी वी हैव सॉल्यूशंस. NDDB का किसी ने नाम सुना है? NDDB, या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हेडक्वार्टर उनका आनंद में है. सो दे हैव कम अप विथ अ राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम. ठीक है, कि आप एनिमल्स को ऐसा क्या बैलेंस राशन प्रोवाइड करो कि जिनके कारण उनका ना ही उनका सिर्फ दूध जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगा, बट उनका जो फर्मेंटेशन जो एंटेरिक फर्मेंटेशन की वजह से जो मीथेन एमिशन होता है वो भी रिड्यूस होता है. सो यू कैन लुक अप ऑन देयर वेबसाइट राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड वी आर क्लोजली वर्किंग विद NDDB इन आवर प्रोजेक्ट एरियाज. अगर आप ये देखें तो जो ये भैंस है ना उसके सिर पे वो बांधा हुआ है, उसके मुंह से जो भी बर्पिंग निकलती है उसको वो कैप्चर करते हैं एंड देन वो मॉनिटर करते हैं कि कैसे होता है. दे हैव एन एप्लीकेशन, सब कुछ इट्स वेरी साइंटिफिक, राइट. वी कैन मूव फर्दर. या so they are not collecting gas. So the collection chamber was just to monitor how much the gas that a cow or a buffalo produces before shifting to ration balancing and after shifting to ration balancing. So just to monitor scientifically, right? So they don't collect the gas and release somewhere else, but just to understand. Let's say, as I mentioned earlier, that dairy cattle emits about 1.5 metric ton CO2 per year, CO2 equivalent per year. So after switching to ration balancing program, it reduces about 15 to 20%. Right? It's a huge, right? Yeah. Ration balancing program by NDDB, National Dairy Development Board. What's the machine name for the It's gas not a machine. chamber? Okay, it's just a chamber, So it's a flux chamber basically. flux chamber. फ्लक्स चैम्बर दैट जो एग्रीकल्चर सॉइल्स में फील्ड में भी यूज़ होता है कि आप जो एग्रीकल्चर सॉइल से कितना एमिशन होता है डायरेक्टली उसको कैप्चर करने के लिए भी आपको फ्लक्स चैम्बर यूज़ करते हैं. अगर किसी को साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है तो आई कैन या हरितधारा इज ऑल्सो it's similar, but its focus is more on milk productivity rather than reducing the methane emission. The ration balancing program focuses primarily on methane emission reduction while also increasing the yield, milk yield. Right. So ये जो machine है वो कुछ नहीं करता. Machine is just to collect the gas to analyze and have the data, scientific data. बट जो एमिशन रिडक्शन होता है डायरेक्ट वो होता है आप उनको क्या खिलाते हो उसकी वजह से. तो दे राशन बैलेंसिंग, राशन जो फीड स्टॉक हम लाइफ स्टॉक को खिलाते हैं उसका बैलेंसिंग, उसमें कितना हरा चारा होना चाहिए, कितना सूखा चारा होना चाहिए, ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर, कितना ग्रेन्स होना चाहिए, कितना अदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. सो दे बैलेंस आउट द राशन जो लोकली कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से क्या कौन सा काउ या बफेलो ब्रीड है उसके हिसाब से सूटेबल होता है. एंड उसके जो पूरा प्रोग्राम दे डिज़ाइन और उसकी वजह से जो उसका एंटेरिक एमिशन होता है वो कम होता है. एंड वाइल ऑल्सो इंक्रीजिंग दी मिल्क यील्ड. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड about any of these intervention in detail, I'll share my phone number, my email ID. You can get in touch with me anytime. Right? So transition to climate smart agriculture. It's a win-win situation for some, win for climate and win for farmers. Some of the practices are, let's say, from the beginning, micro irrigation है, greenhouse है, solar based irrigation है.
तो वो फार्मर के लिए भी अच्छा है और एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है. इट डजेंट अफेक्ट द फार्मर्स. दूसरे कुछ प्रैक्टिसेस है जैसे शिफ्टिंग टू फ्रॉम केमिकल टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. तो इनिशियली थोड़ा यील्ड लूज होता है, एनवायरमेंट के लिए तो अच्छा है वो, बट फार्मर के लिए इनिशियली थोड़ा यील्ड कम होगा, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कम होगा, बट अगेन उसका सेकेंड एस्पेक्ट है उनका जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो भी रिड्यूस होगा. बट इन द लॉन्ग टर्म इट हेल्प्स टू रिस्टोर द सॉइल हेल्थ एंड इट्स फर्दर विन फॉर फार्मर्स इन द लॉन्ग टर्म. So it's a time-taking process, yeah, but it's again win for both farmers and climate change. Thank you. So it's a SRI and DSR. किसी को कुछ बोलना था? जी. SRI and DSR टेक्निक्स जो मैंने बात किया पहले कि less water intensive है, it doesn't emit as much as methane from the paddy fields. It reduces the irrigation water requirement. It lowers the it increases the inputs. It lowers the use of agrochemicals that are being used in fertilizer. तो ये भी कुछ टेक्निक्स है, मतलब क्या कैसे होता है, बट आई फर्दर एग्रोइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर. अगेन जो प्लांटेशन की यहाँ पे कोई बात कर रहा था, ठीक है, तो वो कैसे हेल्प करता है कार्बन सिक्वेस्टर करने में, ड्रॉ डाउन के लिए. क्या क्या प्रैक्टिसेस है, तो डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, कम्युनिटीज़ को सिक्वेस्टर करता है कार्बन, and it has a large potential to provide food security and habitat for biodiversity animals. Renewable energy, solar-based irrigation directly contributes to GHG emission reduction directly and helps farmers to irrigate their land with a less amount of water. Barriers of adaptation, शायद किसने बात किया था परसों या कल. क्या क्या है बैरियर्स, तो इंडिविजुअल लेवल बैरियर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल बैरियर्स हो सकते हैं, और लोकल गवर्नेंस लेवल पे बैरियर्स हो सकते हैं. बैरियर्स सॉर्ट ऑफ रोड ब्लॉक्स कि आप वो अडेप्टेशन करने जा रहे हो, उसके बीच में कौन कौन सी बाधाएं आती है, ठीक है. तो कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? या प्लीज. फाइनेंशियल बैरियर्स, ओके. फाइनेंशियल. ओके, एब्सोल्युटली. जो लोकल हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. या या they are not ready. They are not ready, right. Lack of awareness, that comes under individual level barrier. All right. So some of the examples, your economic comes under limitations of limits to adaptation. तो barriers होते हैं कि जो individual level पे जो capacity अगर नहीं है मेरे पास, awareness नहीं है मेरे पास means नहीं है कुछ करने के लिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, तो वो इंडिविजुअल लेवल का बैरियर हो गया कि मैं वो कर नहीं सकता वहाँ पर, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जिन्होंने बताया एग्जाम्पल की ब्यूरोक्रेसी वो लेवल की नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो वो हो सकता है वहाँ पर. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सके कि कैपेसिटी का गैप है वहाँ पर, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो सारे बैरियर्स हो गए. विल मूव फर्दर. सो अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स टू अडेप्टेशन. देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स: बैरियर्स, कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिट्स. राइट, हमने बैरियर्स की बात की. कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, आई क्विकली बताऊंगा. ऐसे फैक्टर्स जो नेचुरल है, इकोनॉमिक है, सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है, या इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल है, ठीक है. कैन इवन गिव मी सम एग्जांपल्स? ओके, आई क्विकली रैप अराउंड. नहीं पीछे पीछे करिए. नहीं एक वन स्लाइड. यस. सो नेचुरल कंस्ट्रेंट कौन सा हो गया, इकोलॉजिकल या फिजिकल. तो एनवायरनमेंट अगर वैसा है कि वहाँ पे आप एडेप्टेशन प्लान नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपका फिजिकल या नेचुरल कंस्ट्रेंट हो गया. बहुत सारी होता है कि इकोसिस्टम का थ्रेशोल्ड वहाँ पे आ गया, या फिर वहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे प्लान नहीं किया जा सकता, तो वो नेचुरल कंस्ट्रेंट हो गया. इकोनॉमिक, अगेन आपका कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ पे वो प्लान नहीं कर सकते, वो कंस्ट्रेंट है, ठीक है. आपका सोशल के हो गया कि जो भी आपने अगर एक्टिविटी कुछ प्लान की है कम्युनिटी के साथ या कहीं भी किसी भी लोकेशन में, बट वो अनडिज़ायरेबल है,
आप मतलब वो चाहते नहीं वहाँ पे कि वहाँ पे हो, तो वो हो गया। टेक्नोलॉजिकल हो गया कि लिमिट्स टू टेक्नोलॉजी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आपके पास वो नहीं है, आप वो करना चाहते हो। वो इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल अगेन उनकी कैपेसिटी नहीं है या उनका विलिंगनेस नहीं है वो करने का, वो कंस्ट्रेन हो गए सारे, ठीक है। विल मूव फर्दर द लिमिट्स टू अडेप्टेशन, राइट, या प्लीज़। बैरियर आर समथिंग दैट कैन बी कम अक्रॉस ईजीली, मतलब हम उनको ओवरकम ईजीली, सॉरी। एंड कंस्ट्रेन में होता है कि वी नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे फिनेंशियल हो गया, या फिर आपको इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेन है वहाँ पर, या पॉलिटिकल कंस्ट्रेन है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए आपको लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम आपको चाहिए होगा। जबकि इंडिविजुअल, जैसा इंडिविजुअल बैरियर हो गया, तो आपको सिर्फ उसका कैपेसिटी बिल्डअप करवाना है। कंस्ट्रेंट की बात करो, सोशल इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट हो गया, तो वो कम्युनिटी वहाँ पे चाहती नहीं है, उनका हो सकता है उनका रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होता हो, या उनका कोई कल्चरल सेंटिमेंट्स हर्ट होता हो, तो वो उनको कन्विंस कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो वो था, वो डिफरेंस है। लिमिट्स टू एडेप्टेशन क्या हो गया? देयर आर टू लिमिट्स, हार्ड एंड सॉफ्ट लिमिट्स, राइट। हार्ड लिमिट्स ऐसी है कि जो फिजिकल एब्सोल्यूट लिमिट है कि आप उसके आगे जा नहीं सकते, ठीक है। इनफिजिबल टू अवॉइड दिस, आप उसके आगे जाने से बहुत सारा ऐसा कि से टेम्परेचर थ्रेशोल्ड होता है कुछ स्पीशीज़ के लिए, क्रॉप्स के लिए, जो बता रहे थे ना कि कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। पेस्ट का प्रोहिबिशन इतना हो जाएगा कि उसके बाद इट वोंट सर्वाइव। तो वो एब्सोल्यूट लिमिट हो गया, उसके बाद अडेप्टेशन वहाँ पे काम नहीं करेगा, राइट, कि इसके बियॉन्ड काम नहीं करेगा। सॉफ्ट लिमिट्स ऐसी है कि उनका, उसको भी 3 कैटेगरी है, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, आप उसको ओवरकम कर सकते हो, बट अगर उसको टैकल नहीं किया सॉफ्ट लिमिट्स को, तो वो हार्ड लिमिट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट, ठीक है। तो उसको टाइमली टैकल करना ज़रूरी है। तो वी कैन मूव फर्दर। तो अब एडेप्टेशन तो हो गया, अब एडेप्टेशन के बाद बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं, बहुत सारे लिमिट्स आते हैं, जिसके कारण जो रेसिडुअल रिस्क हम बोलते हैं, रेसिडुअल इम्पैक्ट्स बोलते हैं, वो वो आता है। तो दैट कम्स इनटू लॉस एंड डैमेजेस, ठीक है। कि अडेप्टेशन के बाद श्योर जस्ट गिव मी 10 मिनट्स 10 ओके ओके ओके। सो लॉस एंड डैमेज की बात करें, विल क्विकली मूव फर्दर। तो क्या क्या है लॉस एंड डैमेजेस की? जनरल यूएस बताता है कि अडेप्टेशन के बाद भी अगर आपके पास इम्पैक्ट आते हैं तो वो लॉस एंड डैमेजेस है। क्या क्या टाइप्स है उसके? पोटेंशियल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे लॉस एंड डैमेज है। लॉस टू बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, माइग्रेशन, इकोसिस्टम्स के ऊपर है, लॉस ऑफ एसेट्स है, प्रोडक्टिव लैंड एंड लॉस ऑफ इनकम है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का लॉस है, क्रॉप डैमेज है, लाइफ स्टॉक का लॉस है, आपका लॉस ऑफ इंडिजिनस नॉलेज एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, एंड देयर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ लॉस एंड डैमेजेस। अब इसको कैसे करेंगे? ये डायनेमिक है, अनसर्टन है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन सा सिस्टम कैसे अफेक्ट करेगा। कंसिक्यूटिवली कंपाउंडिंग क्लाइमेट चेंज हजार्ड्स प्रोड्यूस करता है, कास्केड ऑफ लॉस एंड डैमेजेस, इनफॉर्मल और नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकता है ये। मूव फर्दर। तो उसको एड्रेस कैसे करना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज़ बना सकते हैं हम, डिलीवरी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं उसके लिए, डेडिकेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। ये कुछ मेजर्स है लॉस एंड डैमेज को एड्रेस करने के लिए। जब मेजर बेस्ड सॉल्यूशन की बात की, इंजीनियरिंग इंटरवेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, हाइब्रिड सॉल्यूशंस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट इंश्योरेंस, पार्ट ऑफ फाइनेंस। गुड प्रैक्टिसेस क्या कौन कौन सी है लॉस एंड डैमेजेस को एड्रेस करने के लिए? कुछ शायद कल परसों कवर की हुई थी, तो आई क्विकली मूव अहेड। क्या ग्लोबल पाथवेज क्या बोलता है? अभी एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो COP26 में एजेंडा एक एक्सेप्ट हुआ था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्शन के ऊपर। तो जो जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा उसके ऊपर, तो रेजिलिएंट इंक्रीज करेगा लाइवलीहुड का और इकोनॉमिक, वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग द GHG एमिशंस। विल मूव फर्दर। ये कुछ पंचामृत है जो इंडिया ने अडोप्ट किए हुए हैं, जो आर एट लाइन विद दी ग्लोबल एजेंडा। हम मूव करेंगे। फाइनेंशिंग कैसे कर सकते हैं अब इसको, जो मुझे श्रुति ने बताया था लास्ट की ऐड करने के लिए, तो मैंने तो थोड़ा बहुत ऐड किया हुआ है।
बट बिफोर गोइंग टू दिस, अगर हम इम्पैक्ट्स अडेप्टेशन की बात करें तो either what we can do is either I can go into financing or I'll take just 5 minutes and talk about some adaptation more. So do you want to go into finance or we? Okay. Okay. So I'll just take 5 minutes. Right. So आप लोग कल फील्ड में गए थे, कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया फार्मर्स के साथ वहाँ पर? क्या इंटरेक्शन हुआ आपका? जस्ट क्विकली क्विकली. ओके. यस. एक एक जस्ट पॉज यू फॉर अ मिनट. मुझे ये जानना था कि आपका इंटरेक्शन क्या हुआ, बट एनीवे नो नो प्लीज़ प्लीज़ सिट डाउन. मेरे पास बहुत थोड़ा समय है तो आई लाइक टू स्पीक. ठीक है. मेरा ये आपको पूछने का इंटेंशन ये था कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं का इसमें कितना योगदान है, किसी को आइडिया है? मैं बता देता हूँ. मैं आई डोंट गोइंग टू, सॉरी, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम एंड आई वांट टू कवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सादाब ने काफ़ी अच्छा पॉइंट रेज किया था कल, सो आई वांटेड टू कवर दिस. एंड सो अबाउट 80 मोर देन 80% ऑफ रूरल women आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है. वो इफ़ नॉट मोर बट एटलीस्ट 50% वो कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर अदर रिसोर्सेज हो. लाइफ स्टॉक में तो उनका 100% कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. बट अगर बात करें तो उनके पास वो ओनरशिप नहीं है, दे डोंट हैव एनी से. वो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करती है, जो फसल आएगी वो बेचने जाएगा उसका हस्बैंड, उसका पैसा आएगा वो उसके पास रहेगा. वो गाय को बकरी को पालन करती है, उसका पैसा जो आएगा वो उसके हस्बैंड के पास रहेगा. ठीक है. उसको बेचने भी अगर जाएंगे तो भी उसका जो पैसा आएगा वो उसके हस्बैंड के पास रहेगा. तो ये तो एक पार्ट हो गया. सेकेंड उसका एस्पेक्ट ये है कि जब इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज, तो जब से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है महिलाओं के ऊपर. कैसे? मैं आई गिव यू सम एग्जांपल्स. कि एक तो उनके पास एसेट्स नहीं है, ओनरशिप नहीं है, और ये एसेट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा अगर. ठीक है. तो अगर लाइवस्टॉक की बात करें, मिल्क की, तो लेट्स से कोई कैलेमिटी हो गई, साइक्लोन, फ्लड और एनीथिंग, ड्रॉट, और लाइवस्टॉक मर गया या फिर उनको बेचना पड़ा. ठीक है. तो लाइवस्टॉक का जो घर में यूज़, दूध के लिए कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे, तो अब हो सकता है वो कम हो गया या बिल्कुल उनको बाहर चलाना पड़ा. ठीक. तो क्या होगा कि वो महिलाओं को दूध नहीं मिलेगा, उसकी बच्ची को दूध नहीं मिलेगा, बट वो दूध मिलेगा किसको? उसके हस्बैंड को या उसके बेटे को. ठीक है. तो वो फूड सिक्योरिटी की बात वहाँ पे आ गई. तो इम्पैक्ट, अब जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, तो हम सिर्फ कम्युनिटी के ऊपर या हाउस होल्ड के इम्पैक्ट की बात करते हैं. वी डोंट फर्दर गो डाउन इनटू कि हाउस होल्ड के अंदर क्या होता है. देयर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स दैट लुक्स इनटू मोर डिटेल. किसी को और जानना है तो मेरे से बात कर सकता है. आई कैन हैप्पीली हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दिस कि इंट्रा हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी कैसे काम करती है, इंट्रा हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड लेबर, जो फार्म लेबर है वो, एंड डोमेस्टिक वर्क है वो कैसे काम करता है, और हाउ दैट इम्पैक्ट्स दी वीमेन. एक और एग्जांपल दूंगा. मैं किसी से बात करता था कल, इशिता से शायद तभी बात हुई थी ये, कि जैसे इम्पैक्ट होता है फ्लड की वजह से, साइक्लोन की वजह से, उनका चारा गीला हो गया या बह गया, उनका हाउस में कुछ डैमेज हो गया, उनके फर्नीचर वगैरह को कुछ बढ़ गया, तो हम करते हैं कि भाई ये हाउस होल्ड के ऊपर इम्पैक्ट हुआ या फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ. ठीक है. बट उसको स्क्रैच से रिबिल्ड करना का काम किसका है? महिलाओं का. उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. तो वो हम कहीं पे कोई बात नहीं करता इसके बारे में, ना ही एक्शन, ग्राउंड बेस्ड एक्शन पे बहुत कम बात करते. पॉलिसी लेवल को कोई इस बारे में बात नहीं करता. सो दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड हियर. ऑलराइट. I won't take much time. I wish I had some more time. I could go in more in details on this. Surely.
Yeah, absolutely. So, yeah, absolutely. Thank you very much for having me. Thank you. Can you guys hear me? Okay, great. Um, so we'll have two breakouts right now. There'll be one breakout here and one breakout right below. The breakout here is going to be on the themes of water, agriculture, climate migration, and climate finance. Okay, and those who are interested in these themes can stay here. Then the breakout down below is education, governance, innovation, and entrepreneurship. So if you're interested in these themes, please, you'll have to go down. Secondly, we'll just